चलिए तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसीलर लेते हैं, जैसे हम अपनी आइज कंसील कर लेते हैं। आपके पास जो भी कंसीलर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन से भी आप लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास कंसीलर ही हो। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से हम इसे सेट करते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर से हम अपनी आई सेट कर लेंगे। मेरी स्किन ऑयली है तो मेरे जो फाउंडेशंस हैं जितने मैं यूज़ करती हूँ वो मैट है। अच्छा, ये हो गया सेट। अब हमें चाहिए एक लाइट कलर। हमेशा पहले लाइट से स्टार्ट करें, ठीक है। आइज की जो बेस है ना वो लाइट कलर से स्टार्ट करें। हमें इसे करना है लाइन, इसी तरह हमें आंख पर भी लगाना है। ठीक है, अब हमें लेना है डार्क शेड। तो ब्लेंड 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 और ब्लेंड ही करना है। ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है, देखिए। ठीक है, अब हमें लेना है एक गोल्डन शेड। ये कौन सा वाला गोल्डन? ये हमने लगा गोल्डन शेड। हमने इनर कॉर्नर पर भी गोल्डन ही लगा लिया।
ये देखिए, ठीक है। कुछ आई शेडो जो है ना वो फिंगर से ही अच्छे लगते हैं, ब्रश से अच्छे नहीं लगते। देख लें। अब हम एक ब्रश लेंगे और उस ब्रश की मदद से हम इन दोनों शेड्स को जो है ब्लेंड कर लेंगे कि कोई हार्श लाइन ना रहे, ठीक है। ये देखें, कोई हार्श लाइन नहीं है। ये आई लुक जो है ये ब्राइडल के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो अब हम जो है आईलाइनर और सब कुछ लगाते हैं और फाइनल आई लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। टेप हटा दी, आईलाइनर लगा लिया, हार्श लाइंस को साफ कर देंगे और वही जो हमने लिया था ना तो वही शेड है हम लगाएंगे। आई पेंसिल लगा लेंगे। हाइलाइटर लगा लेंगे। और इनर कॉर्नर पर भी लगा लेंगे। ये हो गई हमारी आई लुक कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई हमारी दोनों आई लुक कंप्लीट, आंखें कंप्लीट हो गई। ये था एक ब्राइडल आई लुक जो कुछ लोग ब्लैक करते हैं, कुछ लोग डार्क ब्राउन करते हैं, कुछ लोग रेडिश गोल्डन करते हैं। वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मैंने जो है डार्क ब्राउन और गोल्डन के साथ एक आई लुक क्रिएट किया। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें और दुआ में याद रखें। ये गोल्डन एंड डार्क ब्राउन है। अच्छा, उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।